Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें आइसोटोप इफेक्ट विषय रे पढिबा तो देखो देखा गला जे जेतले सुपर कंडक्टर कथा हमें विचार को नेबा देन यार जो क्रिटिकल टेम्परेचर टा अछि गोटे सुपर कंडक्टर रो एटा एक्चुअली डिक्रीज करूची with the increase of your isotopic mass that is capital M. So relation यारो maintained होची ई हिसाब रे the critical temperature Tc is inversely proportional to the square root of this isotopic mass. That means the product of Tc and square root of M is bearing a constant value. Okay, so isotopic effect माने हमें बुझिबा the variation of critical temperature of an element with its isotopic mass. Okay, आउ एई वेरिएशन को हमें ग्राफिकली एई हिसाब रे पाई परिबा Tc को हमें नीचु y एक्सिस रे 1 by square root of m को x एक्सिस रे सो देखो हमें गोटे स्ट्रेट लाइन पाउछु. Okay, so this effect was actually discovered by Maxwell and Reynolds, that is as average isotopic mass of mercury suppose for example गोटे superconductor एटा तो याकू जदि आमे देखुछु यार average isotopic mass it is found to be varying from 199.5 to 203.4 AMU बम atomic mass unit आउ यार critical temperature Tc रा change होची from 4.185 to 4.146 Kelvin where Tc जेमति कहली is the critical temperature okay in Kelvin. So experimentally देखा गला जे ए जो M और Tc they are satisfying this empirical relation. कौन empirical relation? The product of Tc and square root of M is bearing a constant value. Okay, अच्छा suppose हमें T0 को नहीं गला D by temperature. Okay, for the specimen. So D by temperature माने कौन? It is that temperature above which the specific heat of the solid becomes constant as per your Dulong and Petit's law. Okay, so Dulong and Petit's law को ये obey करिबो. Okay, अच्छा so a D by temperature actually एटा T0 हेबोनी एटा TD हेबो. Okay, एटा TD नहीं it is related to the critical temperature by the equation TD square root of M is equal to constant. Okay, so ऊपरे हमें ऑलरेडी पाइथिला गोटे रिलेशन Tc square root of M is constant. So दुईटा को डिवाइड कर देले कोन पाइला हमें Tc by Td is equal to constant. Okay, square root of M cancel out हो गला. Thus we can say that the critical temperature Tc depends upon the D by temperature Td, and since Td is depending upon the speed of sound, solid रे तो sound रो speed को हमें देखिबा. So ए sound रो speed ऊपर depend करे in case of your solid, and the speed of sound in a solid is determined by the lattice vibration which are phonons. So above relation is suggesting that the lattice vibration must have some relation with the superconductivity. Okay, hence the electron lattice interaction must be taken into account in finding the explanation of your superconductivity. Okay, so गोटे superconductor को आमे जेते बेले transition रे रखुछु माने it is undergoing transition from normal state to superconducting state ताले कोन होउची there is actually sudden change is occurring in a manner in which the current is flowing. Okay, so a transition जो होउची obviously critical temperature Tc रे आउ यार डिपेंडेंस जदि हमें देखिबा
आइसोटोपिक मास m सहित एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म मध्य करागला आ एई डिपेंडेंसटा को आमे लिखि परिबा विथ रिलेशन Tc is proportional to m to the power minus beta. So ये बीटा कौन बीटा एक्चुअली यार वेरिएशन जदि आमे देखिबा इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 फॉर द केस ऑफ रुबिडियम टू 0.5 फॉर द केस ऑफ कैडमियम याकू आमे आइसोटोपिक इफेक्ट कोफिशिएंट बोली कि कहिबा ई बीटा को ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर isotope effect in case of your superconductors. Thank you.